From today onward, I'll start a fresh chapter, circular motion. मैं सर्कुलर मोशन आज से स्टार्ट कर देता हूं. अब पहले इस वीक हम सर्कुलर मोशन फिनिश करेंगे, फिर हम वर्क पावर एनर्जी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सर्कुलर मोशन के एस्पेक्ट को और भी फर्दर उसके डिटेल्ड एस्पेक्ट को समझेंगे. मैंने ऑलरेडी थर्मोकेमिस्ट्री का डिस्कशन भी पूरा करा दिया है. थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 भी मैंने महू में भी करा दिया है. अब सर्कुलर मोशन इस वीक के मेरे पास जो 3 लेक्चर है, इन 3 लेक्चर में मैं सर्कुलर मोशन के मेजर कंसेप्ट पोर्शन को फिनिश करवा दूंगा, और फ्रॉम दिस संडे ऑनवर्ड आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स ओवर सर्कुलर मोशन. तो जैसे जैसे मैं इस चैप्टर को करा रहा हूं, आप लोग इसके पैकेज को, इसके प्रॉब्लम्स को करना स्टार्ट कर दो, और जो जो प्रॉब्लम्स बन जाते हैं बहुत अच्छे, जो नहीं बनते उनको मार्क करो और संडे को डाउट्स के रूप में उनको लेकर आओ. We'll discuss them and we'll solve them. Now, देखिए, first of all, let me define circle. A circle is a locus of point equidistant from a fixed point. एक फिक्स पॉइंट है. Now, we draw a locus of point equidistant from this point. हम वह पॉइंट का ग्रुप ले लेते हैं जो कि इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है. सच a geometry we call it circle. Now, a motion over this circle would be called circular motion. Any particle moving over this circle, कोई सभी पार्टिकल यदि इस सर्कल के ऊपर मूव कर रहा, then motion of that particle would be termed as a circular motion. Circular motion is motion of a particle keeping or maintaining fixed distance from a point. एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यदि कोई पार्टिकल मूव करता है तो हम उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं. नाउ, द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज टर्म्ड एज रेडियस ऑफ सर्कल और द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन और द रेडियस सर्कुलर पाथ. फिक्स पॉइंट से यह जो दूरी है इसे हम रेडियस कहते हैं. Now, for this circular motion, we may introduce few terms. First of all, angular displacement. Angular displacement हम डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक रेफरेंस एक्सिस डिफाइन कर देते हैं. सेंटर से पास होती हुई इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कह देते हैं. Let us say initially particle is at this point. Initially, particle is at this point. Now, after some time, the particle moves at this position. Particle इस point P पर आ जाता है. And while moving from initial point to point P, this particle sweeps an angle theta. यह पार्टिकल कोई थीटा एंगल स्वीप करता है. दिस एंगल स्वेप्ट बाय द पार्टिकल, दिस एंगल थीटा इज टर्म्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जनरली डिनोटेड बाय थीटा. नाउ, आफ्टर टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम के बाद यह पार्टिकल इस पॉइंट क्यू पर आ जाता है.
और डेल्टा थीटा एंगल फर्दर स्वीप करता है. डेल्टा थीटा इज द फर्दर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी. वी यूज्ड टू से आफ्टर टाइम interval of delta t, now the final angular displacement is theta plus delta theta. Now we used to say delta theta is the angle swept by the particle during time delta t. This particle swept angle of delta theta during this time interval delta t. This delta theta upon delta t, we denote it by omega and we call it angular velocity. This is termed as angular velocity. Angular velocity is defined as the rate of change of angular displacement. It's the rate of change of angular displacement. Now, we used to say this is finite angular displacement during some finite time interval delta t. We used to say if I wish instantaneous angular velocity किसी भी instant पर, in that case this delta t must approach nearly zero value. It should be very very small, and when delta t approaches zero, we used to say this delta theta would also approach zero. Approach zero का मतलब है it's not exactly zero. It's a very 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 small quantity which could not be easily measured, but it's a non-zero thing. We used to say such a small quantity, we call it differential quantity, and we may write omega is d theta by dt. dt is differential time interval and d theta is differential angular displacement during this dt time interval. d theta is differential angular displacement. Differential शब्द का क्या मतलब होता है? Very 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 small. It's nearly zero. It's approaching zero. It's not equal to zero, but it's so small. ये इतना छोटा है कि वह जीरो के काफी करीब है. dt is differential time. Differential time में differential angular displacement, and that is angular velocity. Now, we used to say, जैसे हमने डिफाइन कर रखा है, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस. एंगल इज arc upon radius. हम कहते हैं this is the arc length. Here to here, this is the arc length. Delta L. This arc is a curved element. The length of this curved element, we call it arc. Now, this angle delta theta
would be equal to delta L upon R. I can always write this expression as a definition of angle. Once again, this delta theta may be substituted by this delta R by L, and I may rewrite omega as delta L by R into delta T as delta T approaches 0. Or omega is 1 by R into dl by dt. I may write it like this. Now, what is this dl by dt? Now, let's try to understand this. Delta L is the distance traveled by the particle during this delta t time. Delta L is the distance traveled by this particle during this delta t time. So, this delta L by delta t linear velocity, इसे हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी. We denote it by dl by dt को भी हम v लिख देंगे, dl by dt. इधर हम ऑटोमेटिकली लिखते हैं डेल्टा टी अप्रोच 0. एंड फाइनली फॉर dl by dt हम v लिखते हुए I'll say omega is equal to v by r, or velocity is equal to omega r. Here this delta L is termed as linear displacement along the curved path. This delta L is linear distance traveled along the curved path. And finally, we conclude that omega is equal to v by r, or v is equal to omega r. Angular velocity may be redefined as linear velocity per unit radius is angular velocity. Linear velocity per unit radius is angular velocity. Now, this linear velocity is always given in terms of meters per second or centimeters per second, while angular velocity is always given in terms of radians per second. देखिए मैं समझाता हूं इसकी यूनिट को. This velocity is always in meters per second. This is an SI system, while it's in centimeters per second in CGS system. Now, while this angular velocity is always given in terms of, omega is always given in terms of radians per second. Radians per second. Always remember, pi radians
is always equal to 180 degrees. Or 2 pi radians is equal to 360 degrees or 1 revolution. जब पार्टिकल पूरी तरह से एक सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेगा, जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से चलते हुए फिर वापस वहीं जब वो लौट जाएगा, तब हम कहते हैं द एंगल स्वेप्ट बाय द पार्टिकल इज 360 डिग्रीज एंड दैट 360 डिग्रीज is also termed as 1 revolution and it's 2 pi radian. 2 pi radian is always equal to 1 revolution. Or 1 radian is always equal to 1 upon 2 pi revolution. 1 radian is always equal to 1 upon 2 pi revolution. For example, the fan revolving, the fan is rotating, any particle, any point on the fan is executing circular motion. If angular speed of fan is 20 revolution per minute, यदि फैन की एंगुलर स्पीड है 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वह 20 रिवॉल्यूशन दे रहा है. नाउ दिस स्पीड, दिस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल may be converted into radian per second in this manner. 20 और रिवॉल्यूशन की जगह मैं लिख दूंगा 1 रिवॉल्यूशन इज 2 pi radian, 20 into 2 pi radian, and for 1 minute I will write 60 seconds. In this manner I convert angular speed which is given in revolution per minute in terms of radians per second. This unit of angle arc upon radius, it's always given in radians. यह एंगल हमेशा रेडियंस में ही होता है. आर्क अपॉन रेडियस से जो भी कुछ आप एंगल डिटरमाइन कर रहे हो, दैट एंगल ऑलवेज कम्स आउट टू बी इन रेडियंस. मैं एक बार इसे भी समझा देता हूं. For example, a particle moving on a circular path of radius 2 meters traveled a distance of, let us say, 40 centimeter. A particle moving on a circular path of radius 2 meter traveled a distance of 40 centimeter. Now what is the angle swept by this particle? इस पार्टिकल ने कितना एंगल स्वीप करा होगा? Now इस पार्टिकल के द्वारा एंगल स्वीप निकालने के लिए, in order to determine this value of theta, we used to say, we'll apply the expression delta L by R. Delta L is the linear distance traveled by this particle along this curved path, जो कि दे रखा है 40 centimeter, and R is the radius of the particle which is given as 2 meters. ध्यान रहे, जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, they must be substituted in the same unit. यूनिट वहां पर कैंसिल हो जाना चाहिए. तो या तो हम डेल्टा एल आर और आर दोनों को सेंटीमीटर्स में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे,
या फिर हम दोनों को मीटर्स में ही सब्स्टिट्यूट करें, किसी में भी सब्स्टिट्यूट करें आंसर सेम आएगा। यदि हम इसे सेंटीमीटर्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लिखेंगे 40 सेंटीमीटर अपॉन 200 सेंटीमीटर, और यदि हम मीटर्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0.4 मीटर बाय 2 meters. In any situation, the unit would get cancel out, unit cancel जाएगा, और यह जो एंगल आएगा इसका यूनिट हम लिखते हैं रेडियंस। इसका जो यूनिट हम लिखेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, मीटर, मीटर कैंसिल। दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 1/5 रेडियंस और 0.2 radians. This is the angle swept by the particle. Now, if I wish to convert it into degrees, यदि मुझे इसे डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो मैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्रीज। दिस वुड बी 1/5, 1 रेडियन की जगह मैं लिखूंगा 180 बाय 5 डिग्रीज। और यदि मुझे इसे रिवॉल्यूशन में लिखना है देन 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन, 2 पाई रेडियन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन। सो 1 रेडियन वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रिवॉल्यूशन, and 1/5 radian equal to 1/5 into 1/2 pi revolution. This is the angular displacement written in terms of radians, written in terms of degrees, and written in terms of revolutions. Now, always remember, radian is a dimensionless or a unit, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, it have got no dimension. Radian or theta, it have got dimension of m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0. It's unitless or dimensionless. इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। नाउ वी यूज टू डिस्क्राइब अ टर्म कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन and non-uniform circular motion.